Okay, so good morning, everyone. So here we meet again on 11th February 2024. We are reading nowadays in our Sunday meetings Vyavahaaraatmak Janvaad, the bilingual version. The Hindi version is originally by Shri A. Nagraj, and the English version is an attempted translation. So we are reading both. So we have been doing it for 1.5 years now, and I think in the next 7, 8 sessions, we should be completing the book. Only last 12 or 13 pages remain to be completed. So we will be beginning from the third paragraph of page 127 of the original Hindi book. Okay, this is the Hindi book, 2017 edition. And this is what we are referring as the base document for the translation. So let's straight away go to, yeah, here we are. So who will be reading? Dev bhai, I think आप पढ़ेंगे क्या? जी भैया। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों जो है इस ये छोटा सा पैराग्राफ है, एंड देन वी कैन रीड बोथ द पैराग्राफ्स टुगेदर, एक्चुअली दैट विल बी गुड. ओके। जागृति पूर्ण विधि को तलाशने के उपरांत सदा सदा से बनी हुई इतिहास जुड़ी हुई मिलती है और जागृति के उपरांत व्यवस्था का सूझबूझ होना मानव कुल की ही प्रतिष्ठा है। मानसिकता के आधार पर जागृति को विकसित करने वाला, पहचानने, जानने, मानने, प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव ही है। Upon discovering the way of awakening, all the incidents of history make sense. Complete understanding of the system upon awakening is the eminence only of humankind. It is only the humans and no other units in nature who have the ability to expand, recognize, know, assume, and evidence the awakening based on their mindset. हर जलवायु में विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं, अर्थात मानव शरीर का रचना विभिन्न नस्ल, रंग, रूप का होता है। यह बात इसी धरती पर गवाहित हो चुकी है। इसी प्रकार अन्य धरती पर भी हो सकती है। जागृति की महिमा, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज का प्रमाण किसी अन्य धरती अथवा अनंत धरती में भी मानव का उदय हो चुका हो, उन सब का स्वरूप एक ही हो जाता है, यानी मानसिक स्वरूप, क्योंकि उद्देश्य उद्देश्य एक ही बनता है। दृष्टा कर्ता भोक्ता पद निश्चित हो जाता है। इन तथ्यों से हमें विदित होता है हम मानव लक्ष्य संपन्न विधि से जीने के लिए जागृति एकमात्र सहारा है। मानव जागृति सहित सअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है ही। वर्तमानता सदा सदा के लिए नित्य है। इस विधि से हम सर्व शुभ कल्पना, परिकल्पना और प्रमाण तक की स्थिति में आते हैं कि परिवार मूलक स्वराज्य विधि से विश्व मानव परिवार सभा को अभी तक वैभवित न होते हुए वैभवित होने की संभावना मानव मन तक पहुंचती है। संभावना एक स्वीकृति होती है। आगे मानव की चाहत बलवती होने की स्थिति में व्यवहार ही वर्तमान हो सकता है। यही आवश्यकता हर मानव में विद्यमान है। Sorry. Physical appearance of humans differs according to the climate. In other words, there are differences in formation of the human body based on ethnicity or race, appearance, color, and other physical attributes. This has happened on this planet. In a similar manner, it can happen on some other planets too. True form or the mental form of the magnificence of awakening and evidence of undivided society and universal system is similar everywhere, whether on another planet or on many other planets, wherever humans have emerged. It is so because there is
but one goal. The seer, doer, and enjoyer status becomes well defined. It is apparent from these observations that awakening is the only refuge for goal based living. Humans and awakening are eternally present in coexistence. Presence is eternal forever. In this manner, we reach the state of imagining and visualizing universal well being where the grandeur of the World Council, by way of the based family based self governance system, looks probable to the human mind, even though not yet accomplished. There is no doubt that it is probable, or there is acceptance of this probability. Having said that, it can materialize if there is a strong human desire. This need is present in all humans. Thank you. Thank you, Devbhai. Thank you. So, see, we in these last 15-20 pages of chapter 7, okay, the book has 8 chapters, so we are on the last 2 pages of the chapter 7 now. Today, most likely, we are going to complete it. So, in these last 15-20 pages, Babaji has explained in detail the he has given a framework of an explanation of the 10-tier universal system. Okay, like, and he has given us, food for thought on how at each tier things will work out. So right now we are on the 10th tier, which is the, World Family Council. And here, as we saw last time also, this is where, Babaji mentioned in the previous paragraph, which we read last time, that, there could be other planets also, what we call normally the aliens, and, like there could be attacks from aliens and things like that we see in many scientific movies. And, some scientists are doing study of that also. Like naturally, if something is in the human mind, there will be some people at all times who will keep thinking on that. Okay, so this what Babaji is saying is this is under the purview of the 10th tier, the World Council. Okay, up to the 9th tier, mostly the focus on what is happening on this earth. Okay, but if there is something beyond this earth, okay, space explorations or aliens and things like that, so that will be, on the 10th tier. And then if people are required to investigate that or do participation, they will come from all over the world. Okay, so this is what we discussed last week, where, whether there could be an attack from, there is a fear of invasion of Earth from some other planet. Okay, this is a sentence we studied last week, and this paragraph we read. Now, here also in these two following paragraphs which we read just now, something like similar to that, either the history of the mankind or other planets, these are being discussed in more detail. So in this context, we'll just read it again line by line. जागृतिपूर्ण विधि को तलाशने के उपरांत सदा सदा से बनी हुई इतिहास जुड़ी हुई मिलती है. Okay. So upon discovering the way of awakening, all the incidents of history make sense. Okay. I mean, we studied history in school, okay, and it is taught in I'm sure in colleges, universities, all over the world. No, now, when I look at this sentence, Babaji is, putting awakening in context of history, इतिहास जुड़ी, सदा सदा से बनी हुई इतिहास जुड़ी हुई मिलती है. So history is not a random collection of events. Things did not happen randomly. They are interconnected. Okay, all the events of history, there's a pattern behind that starts making sense. Okay, तो मानव ने अभी तक, जैसे now when we look at this, what are we trying to say? मानव ने अभी तक रूप पद धन बल के आधार पर जो है वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है. Suddenly when we look at it, we realize most of the kings, okay, most of the rulers, they were driven by this motive. है ना?
रूप पद धन बल के आधार पर अपनी पहचान जो है वो बना रहे थे। ओके, या अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए। सो इफ देयर आर सम कंट्रीज, व्हेन वी लुक एट इंडिया, सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आई मीन वी हैव स्टडीड मोस्टली इंडियन हिस्ट्री। सो in India the land is fertile and natural resources are abundant. Okay, but there are some neighboring countries, when we go to Afghanistan or Arabian side, or when we go to Mongolia side, maybe the natural resources are not so much available. So people living there, they also wanted to get natural resources. So like there were attacks here to in this direction. So the events of history, they start making sense. Now, now where it is going on, that is what is being said here. और जागृति के उपरांत व्यवस्था का सूझबूझ होना मानव कुल की ही प्रतिष्ठा है. Complete understanding of the system upon awakening is the eminence only of humankind. Okay, so complete understanding is only possible for the units of knowledge order. Only the humans can have the complete understanding. This is further mentioned in the next sentence. मानस सूझबूझ होना मानव कुल की ही प्रतिष्ठा है. मानसिकता के आधार पर जागृति को विकसित करने वाला, पहचानने, जानने, मानने, प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव ही है. It is only the humans and no other units in nature. No other units in nature is something which I have added to give additional emphasis. Okay, we can easily remove it out also, but there are 4 orders, and only in the knowledge order, it is the humans and no other units in nature who have the ability to expand, recognize, know, assume, and evidence the awakening based on their mindset. मानसिकता के आधार पर इसको बोला, बेस्ड ऑन देयर माइंडसेट. ओके, इनको प्रमाणित करने वाला, विकसित करने वाला, पहचानने वाला, इन सबको बोला एबिलिटी टू expand, recognize, know, assume, and evidence the awakening based on their mindset. So history starts making sense. History has not so far sort of gone beyond रूप पद धन बल. एक बार समझने का काम आता है ना, ये समझने वाला जो काम है, this has been missing, the complete understanding. Okay, so this is the next step. So when future historians will look at the journey of mankind, the 20th century, 21st century, okay, where Babaji has given Madhyas Darshan, I truly believe that this will be marked as a milestone in the human history when future historians are writing about. This is where humans have understood what they are, they have understood what their true potential is, and they have understood what are the mistakes which are being made so far. Okay, in the physical sense, scientific sense, resources, and in the direction of resources, mankind has made progress. Okay, but because they have not completely understood themselves and the entire existence, while we have made advancements in technology, we have created a lot of disturbance in the natural balance of this earth. Okay, this is we have discussed in this book. Otherwise, also this is being talked about, and right now there are no practicable solutions to resolve this. A lot of debates are happening, but things are becoming worse only. Every day I am reading in the newspaper, there are certain tipping points. Tipping point is what they say, situation becomes so bad that now you cannot sort of control it. So whatever has to happen will now happen, and then a new world order will take place after that. So we are very close to tipping points, a certain tipping points. Okay. So it is now or never kind of thing. Humankind, this is how history has progressed, and this understanding part, this was missing so far. This is what
in summary, although this paragraph itself is very small, I just thought that we will talk about it in a little detail. इसी के साथ नेक्स्ट वाला जो है, अगेन बाबा जी इज एक्सपेंडिंग ऑन दिस, इज टॉकिंग अबाउट अनंत धरती तक, फिर से इसमें भी लेकर के आ रहे हैं। हर जलवायु में विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ह्यूमंस डिफर्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। अर्थात मानव शरीर का रचना विभिन्न नस्ल, रंग, रूप का होता है। In other words, there are differences in formation of the human body based on ethnicity or race, appearance. Okay, this ethnicity is mostly, when I'm using this word, this is geography dependent. Okay, people who live near the equator, their complexion is slight on the darker side. People who live near the polar regions, their complexion is fair. Okay, people who live in mountainous areas, generally their average height is a little less. Okay, these are things which we see all over the world. Okay, these observations are already there. So this is what is being said. In other words, there are differences in formation of the human body based on ethnicity or race, appearance, color, and other physical attributes. यह बात इस धरती पर गवाहित हो चुकी है, इसी प्रकार अन्य धरती पर भी हो सकती है। This has happened on this planet. In a similar manner, it can happen on some other planets too. जागृति की महिमा, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं, इट विल बी इजी टू रीड। जागृति की महिमा, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज का प्रमाण, किसी अन्य धरती अथवा अनंत धरती में भी मानव का उदय हो चुका हो, उन सब का स्वरूप एक ही हो जाता है, यानी मानसिक स्वरूप एक ही हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य एक ही बनता है। इसको देखते हैं। ट्रू फॉर्म or the mental form of the magnificence of awakening and evidence of undivided society and universal system is similar everywhere, whether on another planet or on many other planets, wherever humans have emerged. Okay, possibly as we discussed last time in the previous paragraph on 4th February, that humans have been imagining that there could be aliens or there could be humans of other planets and they could be invading Earth. So if they have emerged there also the magnificence of awakening will be similar, because they will also have a similar history. If there is some other planet, there also at some time those humans would have emerged. When they would have emerged, they would not be awakened. They would be, deluded. They would be making mistakes. When they also would be making mistakes, they also would not be liking. And people there also would be thinking about what to do about it. And at some time, they would also become awakened. This is the journey which is bound to happen at every planet. Okay, this is very powerful. Not only the history of this planet makes sense, the whole existence starts making sense. Okay, so suddenly the thought process goes like this. So if there are some aliens, okay, certainly they are more developed than us, because we have so far not found any other Earth where humans are living, but they have found us. Okay, so if there are some aliens who have found us, but we did not find them, okay, then they are more developed. So probably in the awakening progression also they are more developed than us. Again, not only in technology. As we are seeing on this technology, on this earth, technological progress and progress in the area of understanding, in the area of wisdom, these are two different things. Okay, so on this earth, technological advancement happened first. Okay, and now
we are making a foray into the complete understanding in the wisdom part. If there is some other planet who are more developed on from us, they have probably already reached that stage. Okay, so whether they want to invade us or they are also out on exploration, this is a question we can all now think about it. It suddenly becomes more relaxing also if someone was already worried on this count. कैसा लग रहा है शिल्पा दीदी? स्माइल कर रहे हैं काफी. हाँ भैया, बहुत रोमांचक. वेरी फैसिनेटिंग. Okay. It is so because there is but one goal. Okay, what is that goal? मानव सुखी होना चाहता है. Okay, वो जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व. If there are people on other planets, that also would be their goal also. Okay, ये जो है इस तरह से इसको देख रहे हैं. दृष्टा कर्ता भोक्ता पद निश्चित हो जाता है. एक ही उद्देश्य बनता है और उद्देश्य बनने के साथ साथ फिर फर्दर ऑन क्या बता रहे हैं? दृष्टा कर्ता भोक्ता पद निश्चित हो जाता है. द सीयर डूअर एंड एंजॉयर स्टेटस बिकम्स वेल डिफाइंड. इन तथ्यों से हमें विदित होता है हम मानव लक्ष्य संपन्न विधि से जीने के लिए जागृति एकमात्र सहारा है. It is apparent from these observations that awakening is the only refuge for goal-based living. मानव जागृति सहित सह अस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है ही. Humans and awakening are eternally present in coexistence. वर्तमानता सदा सदा के लिए नित्य है. ना, presence is eternal forever. So ये जो previous line थी, humans and awakening are eternally present in coexistence. So I mean, when I look at it and I try to understand the sentence, the way I look at it, if I were to describe it in my words, is awakening is something which we do not have to create. When, for example, laptop is something which humankind created, because laptop as such was not existing, let's say 20 years ago or 40, 50 years ago. Okay. Car was not existing, let's say 200 years ago. So these are the so-called creativities or creations which we are seeing by effort of humankind. These are physical creations. Now, awakening is not something which we have to create. It is already there. This is what is being said. Humans and awakening are eternally present in coexistence. Okay, existence is what has to be understood. So existence is there. It only has to be understood. This understanding of everything in existence, this is awakening. Okay, so it is already there. We just have to recognize it. I mean, sometimes, these are the phrases on, I mean, which words look similar, but it took me quite a while to sort of, make an interpretation out of them and make it stable within me. Lekin, when we are talking about it, I think this is what I wanted to explain here. मानव जागृति सहित सह अस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है. So ये words, तो every word we understand, but the meaning was elusive to me for quite some time. So क्या है? जागृति है ही in the sense existence है ही. Existence को समझना, understanding, complete understanding of the existence, and humans are also in the existence. So complete understanding of the humans. This is awakening. Okay, so this is already existing. It just has to be taken in, assimilated in us. Okay, it needs to be understood. ये नित्य वर्तमान है. ये इसको नित्य वर्तमान को ये कहा कि humans and awakening are eternally present in coexistence. वर्तमानता सदा सदा के लिए नित्य है. Presence is eternal forever. So it is not that awakening is present today,
may not be present tomorrow. Okay, awakening will always be there. Okay, if this generation doesn't do it, okay, maybe people who will exist on this earth, who will be present on this 500 years later, then they will recognize it. Awakening is not going anywhere. It is ever present. इस विधि से हम सर्व शुभ कल्पना, परिकल्पना और प्रमाण तक की स्थिति में आते हैं कि परिवार मूलक स्वराज्य विधि से विश्व मानव परिवार सभा को अभी तक वैभवित ना होते हुए वैभवित होने की संभावना मानव मन तक पहुंचता है। वैभवित ना होते हुए वैभवित होने की संभावना मानव तक मन तक पहुंचता है। इसको कह रहे हैं इन दिस मैनर वी रीच द स्टेट ऑफ इमेजिनिंग एंड विजुअलाइजिंग यूनिवर्सल वेल-बीइंग वेयर द ग्रैंडियर ऑफ द वर्ल्ड काउंसिल by way of family-based self-governance system, this 10-tier system which we are studying now in this chapter, looks probable to the human mind even though not yet accomplished. Okay? अभी तक वैभवित ना होते हुए वैभवित होने की संभावना मानव मन तक पहुंचता है। It looks probable to the human mind even though its practical form is not available, even though it is not yet accomplished, but it is doable. So for anything to do, first of all, its visualization and imagination is required. Right? Even in the physical sense, in the technological advancements also, whatever humans have created or made, someone first conceptualized it and then gave it a physical shape. So for awakening also, first its conceptual understanding will be there. Okay. And then it will start taking shape. This is, although today it is not there. For example, someone who started making computers, at that time computers were not there. But then somebody had a concept and eventually computers were there. 200 years, 300 years ago, cars were not there. Someone had a concept and eventually cars were there. So universal systems, undivided society, its imagination has been going on. Babaji is not the first one who is talking about it, very honestly speaking. Okay, we have been talking about world peace, and in India also, since thousands of years ago, we are talking about Vasudhaiv Kutumbakam. Okay, the world is the one family. But so the concept is there. How to reach there, that clarity is not there. So we have not reached there yet. So Babaji is saying, how to reach there, that also is Babaji has presented. It will naturally take time. Even technological advancements took a few generations. Okay, so this also will take a few generations, that is, or a few centuries. That is perfectly all right. Okay. So this is so इसकी संभावना मानव मन तक पहुंचती है ना? It looks probable to the human mind. संभावना तक स्वीकृति होती है. Okay? इसको फिर आगे कह रहे हैं, there is no doubt that this is probable. Okay, now संभावना तक स्वीकृति होती है. मैं इसका honestly speaking, I am trying to interpret कि इसको कह क्या रहे हैं. We can read the next sentence also. आगे मानव की चाहत बलवती होने की स्थिति में व्यवहार में वर्तमान हो सकता है. यही आवश्यकता हर मानव में विद्यमान है. Okay, so next sentence is simple. Having said that, it can materialize if there is a strong human desire. Okay, concept में आ गया. Now, anyone who feels strongly about it, okay, they will make efforts to materialize it. So having said that, it can materialize if there is a strong human desire. The need is present in all humans. Okay. The need is present in all humans. If there is a desire, then
then endeavors will be made for that, efforts will be made for that. More the people who have a strong desire, more the chances are there that it will happen, and it will happen sooner than rather than later. Now, only this sentence is something, well, I'll need your help. संभावना तक स्वीकृति होती है, तो संभावना जो है मानव मन तक पहुंचता है। कह सिर्फ यही रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि संभावना की फिर स्वीकृति होती है, और वो चाहत बलवती होने में फिर वो मैटीरियलाइज हो जाता है। So there is no doubt that it is probable, or there is acceptance of this probability. These are two constructs which I made, but I'll invite suggestions. Okay, so we have Divya and Manoj Bhai and Prabha Didi also. Welcome. नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते, बिल्कुल ठीक। ठीक है, so we are reading, we are trying to see how to translate this sentence. संभावना तक स्वीकृति होती है। बताइए, जो लगातार जुड़े साथी रहते हैं, आप ही में से कोई, देव भाई, दिव्य, शिल्पा दीदी। जी शिल्पा दीदी। हाँ हाँ भैया, मेरे को लगता है कि till its possibility there is acceptance of the same, or there is acceptance of the same till its possibility. There भावना is, को कैसे करें? हाँ, नहीं एक सेकंड पहले लिख लेते हैं। There is acceptance acceptance of of the the same same till its actually its manifestation, till its manifestation, but संभावना के लिए manifestation बहुत strong हो जाएगा, I'm not sure. Till its possibility slash manifestation. नहीं तो सेंटेंस में एक बार पहले लिख लूं, आप दोबारा बोले। देयर इज एक्सेप्टेंस, ये इतना ऐसा ही लिखना है। हाँ, there is acceptance of the same till its ऑफ possibility द सेम टिल इट्स पॉसिबिलिटी slash manifestation. ओके, संभावना तक स्वीकृति होती है। एक्चुअली भैया जो आपने ब्रैकेट्स में लिखा है ना, वो मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब मुझे भी और मतलब वो वाले दो में था। मैं इनफैक्ट थोड़ा सा बेटर मुझे ऐसा लगता है तब हो सकता है जब हम ये लाइन को पिछले पैराग्राफ में जोड़ दें। लुक्स ओके, क्योंकि पिछला जो पैराग्राफ में लास्ट लाइन जो है उसमें आ गई अच्छा पिछला इसी का ही। इंग्लिश। ओके, हाँ जी, कहाँ गया? कैन यू हाईलाइट? हाँ, even though ये not yet accomplished ना, वो वाला ही इसके बस ऊपर हाँ वाला। हाँ, इसमें लुक्स प्रोबेबल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। हाँ जी तो इसी बिल्कुल। के साथ में ये लाइन लगा देते हैं, एंड देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो ये इसी के साथ ही है, ये पैराग्राफ अलग नहीं है। दिस इज फॉर रीडेबिलिटी दैट आई हैव कन्वर्टेड इनटू द पैराग्राफ। व्हेन यू अच्छा, वर रीडिंग इट, इट वाज वन पैराग्राफ ओनली। हाँ ओ अच्छा ठीक है। हाँ, अब ये ठीक लग रहा है बिल्कुल मुझे तो। हाँ, ये वो ठीक है, there is acceptance प्रोबेबिलिटी को of this रेफर possibility. कर दिया है इसने। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है है। ये। तो बढ़िया, ठीक है। आगे तो इतने तक उस संभावना की स्वीकृति तो बन गई। अब इसके आगे क्या होगा देखो, जैसे हम भी कई बार कह देते हैं ना, किसी को समझा दिया है ना, फिर कहते हैं भाई देखो आगे मेहनत तो तुम नहीं करनी है ना, बाकी काम तो तुम नहीं करना है, हमने तो जो कहना था वो कह दिया। तो यहां पर भी ये आगे का वही मतलब रहता है कि जो कहना था वो कह दिया। तो हैविंग सेड दैट it can materialize if there is a strong human desire. So having said that, what Babaji is saying is, देखो, whatever I had to explain to you, I have explained. But this is something which not a single individual can do. Okay, it's a collective thing. So if more humans will have strong desire for it, it will happen. Otherwise, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा. Things will continue as they are. Okay, so having said that, it can materialize if there is a strong human desire. The need is present in all humans. जी शिल्पा दीदी।
just a suggestion that if की जगह if it is when, मतलब मुझे लग रहा था when से better लग रहा था थोड़ा सोच के. हाँ हाँ, वो ठीक है. कई बार तो इफ And एंड व्हेन दोनों यूज कर देते हैं, है ना. व्हेन का ऐसा लगता है कि कभी तो हो जाएगा. and इसमें भी जो next है ना, this need is इसकी जगह मतलब the need for this, मतलब मुझे ऐसे लग रहा हाँ था the हाँ need हाँ for हाँ, this. द नीड फॉर दिस, ये भी ठीक है. द नीड फॉर दिस is present in all humans. Okay, so like these are also very, sometimes they're very, I mean, not sometimes, actually everything is there. This sentence also, it provoked some thought in me. For example, it is very similar to what Babaji is saying here. If we want to see a real life example which is easy for everyone to understand, wars have happened in the history of mankind. The whole history is full of wars only. And they did not happen only in history, but in our times also, they have happened and they are happening also. For the last couple of years, we are seeing the US-Ukraine war going on. And for the past 3-4 months, we are seeing, in the Israel and neighborhood also, these wars are going on and people are getting killed. Now, do humans want to live in the conditions of war, or they want to live in peace? If a straightforward question is asked, so the universal answer will be no one wants to live in conditions of war. Okay, the people who are living there right now, it is certain that they also do not like those conditions. Okay, and if any humans in the history also, whenever they faced wars and suffered due to that, nobody wanted those conditions. Now so what does it mean? We want a peaceful society. Now this need is there, is present in all humans. Okay, I'm just trying to relate with an example. But when will we have a peaceful society? If when there is a strong human desire. Right now, the desire is there, but it is not strong enough. The strong desires is there for technology. So that is why in technology we are making progress. Okay, how to live peacefully? There the progress is not being made. तो बाबा जी ने तीव्र इच्छा करके जो है ना, मध्यस्थ दर्शन में एक शब्द बताया है ना, इच्छाओं की कैटेगराइज करते हुए कारण इच्छा, सूक्ष्म इच्छा, तीव्र इच्छा, ऐसा करके इच्छाओं को बोला है. तो तीव्र इच्छा इज समथिंग which which comes in my living, day-to-day thoughts, day-to-day living, then we can see what is happening in me. So right now, when we look at overall society, तीव्र इच्छा is the strong desire is for making money, for gaining status, for accumulation of physical comforts, for making technological advancements. That is where the focus of the society is. We are seeing progress in that. इस तरफ अभी तक strong desire नहीं बना है. So main चीज जो मेरे को लग रहा है इस सब से, in nutshell, if we want to take away, is although we are at the 10th tier, we are talking about the World Council, it is equally applicable in families also. In our own families also, is the focus on physical comfort, wealth, social status, vacations, or awakening is also a strong desire in the family. If awakening is a strong desire in the family, then certainly it will be seen as fulfillment and satisfaction in relationships also. Otherwise, we are seeing a lot of families around us all over the globe where people or family members are at war with each other, so to say. Okay, it is not only the countries which are at war with each other. Okay, even the family members are also at war with each other. So nobody likes those conditions. This is what is being highlighted here. But the need is there in all humans.
And so if we can sort of, if we can draw attention to this thing, जैसे जैसे हमारा अपना ध्यान जाता है, okay, we develop our own understanding, and then in a calm manner, okay, in a steady manner, the people with whom we are living, okay, in our friendships, in our families, उनका भी ध्यान इस तरफ जाए, their attention is also drawn to that. This is important. Okay, the need is already there. उसको सिर्फ पहचानना है. जी शिल्पा दीदी. भैया, can you just recap what is क्या बोला, सॉरी, तीव्र इच्छा के साथ सूक्ष्म इच्छा और कारण इच्छा? Can you just explain in one line? हाँ जी. तो सूक्ष्म इच्छा जो है ना, उसको बाबा जी ने ऐसा करके बोला. सबसे पहले उन्होंने बोला तीव्र इच्छा. Okay, what is this strong? Like we have not, I do not remember the exact words which we are using, but we can say तीव्र इच्छा is a strong desire. So explanation of Babaji wherever it is referred is तीव्र इच्छा is whatever is in our day-to-day living, what my family is doing on a continuous basis, on a daily basis, on a weekly basis, on an annual basis. If I look at it the last 10 years, if I looked at the time since our marriage till now, हमारा फोकस किस तरफ है? जो हमने किया है वही हमारी तीव्र इच्छा है. ठीक है. फिर रहते हैं सूक्ष्म इच्छा. तो सूक्ष्म इच्छा ये है which we think something needs to be done. Okay, but either we do not have clarity on that, or the desire is not strong enough for it to be manifested in my living on a day-to-day basis. Okay, so no concrete steps are generally taken for that. ना सब प्यार से रहें, everyone should live peacefully, है ना, country should also live peacefully, families should also live peacefully. कि ये सब जो है ये सूक्ष्म इच्छा के रूप में हम सब में है ही. But what are the concrete efforts which are being made in the families or at the national level or international level for these? Then we realize कि नहीं उस पे कुछ खास हो नहीं रहा. So these are minute desires, so to say. Okay, एक है strong desire. So if we are confused in ourselves also, what is my strong desire or what is the collective strong desire of my family? Look at 10 years, past 10 years. Where has been the focus of the family? That is what is your strong desire. That is what is happening. ठीक हो गया दीदी? इतना ये दोनों ठीक हो गए. Minute desire versus strong desire. So तीव्र इच्छा और सूक्ष्म इच्छा. The third one is कारण इच्छा. Okay, so the कारण इच्छा is like causal desire. Okay, something due to some reasons, by way of destiny, I come across that. For example, in our journeys, by way of destiny, all of us came across Madhyasth Darshan. Okay. Now, maybe some of us made efforts to, when we were with some quest or with some inquiries that we came across, but for many people it is also like somebody just mentioned that there is a good workshop going on and you go there. So you suddenly encounter something, and then it triggers a desire in you. Okay, we find such people in workshops also who come by chance to the workshop. Okay, and then जो है it creates a desire them. So उसको जो है कारण इच्छा जो है वो बोल रहे हैं. तो सूक्ष्म इच्छा को suddenly एक connect मिलता है, and then जो है वो अपने में. So there are some basic questions which everyone goes through in their journey of life. मैं क्या हूँ, God क्या है, like we hear these things, but and how will peaceful living be ever be there, like क्या परिवार में शांतिपूर्वक रहा भी जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता. ये सब बातें कभी ना कभी किसी ना किसी के मन में हमेशा आती ही है, right? So there comes a time sometimes when you suddenly have a solution looking at your face, right? And then it triggers a desire in us कि इसको, then whether it becomes a strong desire or not, it depends on the state of that person at that time. ऐसा करके इन तीनों को देखिए.
Thank you, Bhaiya. Okay, so any questions on these two paragraphs which we read? इसको लग रहा है डिस्कशन काफी हो ही गया है, but any question or any sharing? All ठीक है. good. तो दिस वाज, अब हम चौथी कड़ी पे पहुंच रहे हैं. तो इसका ये जो हमने सारा डिस्कस किया था, ये थर्ड एलिमेंट था, है ना, ऑफ द 10th टीयर. सो नाउ फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट, एंड समराइज करके एंड ऑफ चैप्टर 7 हो जाएगा. सो लेट अस सी इफ वी कैन कंप्लीट इट. कौन, शिल्पा दीदी आप पढ़ेंगे इसको? Ji. Spencer, if you want, you can read the English part later. Yeah, sounds good. Yeah. चौथी कड़ी विनिमय कोश है. विश्व राज्य परिवार सभा में विनिमय के लिए कोई खास वस्तुएं नहीं रह जाते हैं. आवश्यकता महसूस होने की स्थिति में विश्व मानव के लिए उपयोगी वस्तु को प्रस्तुत करेगा. इसकी संभावना दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण संबंधी वस्तुओं में परिष्कृत और गति हो सकती है. विश्व मानव परिवार सभा की गरिमा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा संतुलन संबंधी औजारों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है. विद्युत ऊर्जा, विकर्णीय ऊर्जा, यह दो प्रकार की ऊर्जाएं अति महत्वपूर्ण हैं. इनमें से विकर्णीय ऊर्जा पर संतुलन का नजरिया विश्व मानव परिवार सभा में सुस्पष्ट रहने की आवश्यकता है. इसको कारगर बनाए रखना अर्थात सर्वसुलभ करने योग्य ज्ञान, विवेक, विज्ञान, कर्माभ्यास, संपन्नता को बनाए रखना है. किसी भी सोपानीय आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण की कर्माभ्यास की व्यवस्था को बनाए रखेंगे. यही विनिमय का प्रधान स्वरूप रहेगा. यह विश्व मानव परिवार सभा का महिमा मंडित स्थितियों के लिए अनुकूल है. Shall I start? Yes, you can start. Exchange reserve is the fourth element of this council. In the World Council, there is not much left for the exchange activity. If the need is felt, they will focus on development of products for universal human needs. Refinement and further development in goods related to transport and telecommunications are its examples. As per the stature of the World Family Council, they need to pay maximum attention towards development of machines which run on sustainable energy. Electric energy and nuclear energy are two important forms of energy. Out of these, the World Family Council needs to be absolutely clear about the long-term impact of nuclear energy. This council will ensure continuity of its knowledge, wisdom, and science and practice so as to make it accessible to all. They will make provisions for providing education, training, and practice to any other tiers, if needed. This will be the true form of the exchange dimension. It befits the tall stature of the World Family Council. It befits the tall stature. Yeah, it befits the. Good. Okay, so this is straightforward. We'll just look at it line by line also. चौथी कड़ी विनिमय कोश है. Exchange reserve is the fourth element of this council. विश्व राज्य परिवार सभा में विनिमय के लिए कोई खास वस्तुएं नहीं रह जाती हैं. कि in the World Council there is not much left for the exchange activity. Okay, it will mostly happen by 9th tier itself. आवश्यकता महसूस होने की स्थिति में विश्व मानव के लिए उपयोगी वस्तु को प्रस्तुत करेगा. If the need is felt, they will focus on development of products for universal human needs. Okay, so
So for them, it is mostly like, somewhere earlier we mentioned it, it's time to repeat it here. Mostly, most of the physical work will be done till around 6th tier or something. Okay, this is something which we have heard from when I was doing study and in my interactions with our senior teachers who were teaching us, and the way they have understood from Babaji is most of the physical activity will happen up to the 6th tier. Okay, beyond the 6th tier, mostly it will be policy making kind of thing. Okay, so this is a distinction here. So here Babaji is saying in the 10th tier, something specifically he is saying here. So that, like there is not much left to do the physical exchange part of it. They will just be sort of seeing that the exchange everywhere is happening properly. And if there are any hindrances or any hurdles or any limitations somewhere, they will try to assist in overcoming that. Similarly, if the need is felt, they will focus on development of products. They will try to recognize, are there some things which can be developed more? Okay. And then if such a thing is felt and recognized, then the actual work will be done from 9th tier downwards only. Okay, ऐसा जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं. इसकी संभावना दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण संबंधी वस्तुओं में परिष्कृति और गति हो सकती है. Refinement and further development in goods related to transport and transportation are its examples. Okay, normally refinement जो है ना, इसमें I feel like now that I'm reading it, advancement may be a better word rather than refinement. Advancement and further development in goods related to transport and telecommunications are its examples. Okay, so they will probably see and give encourage the other tiers to maybe to make the things faster or better or longer lasting increase. So these are the kind of things they will be there. So parishkriti ke liye we have earlier used refinement, but here I think that advancement looks better. Shilpa Didi क्या कह रहे हैं? नहीं मैं वही पूछ रही थी, परिष्कृति व्हाट डज इट मीन? ठीक है, आप बता रहे हैं. परिष्कृति मतलब किसी चीज को इम्प्रूव करना. तो मतलब इम्प्रूवमेंट जैसे भैया वो इम्प्रोवाइजेशन भी हो सकता है ना, इम्प्रूव करना. तो हाँ बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशंस भी हो सकता है. बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशंस भी अच्छा शब्द है यहाँ पर. इम्प्रोवाइजेशन इज अ बेटर वर्ड. देव भाई आप भी कुछ कह रहे थे? सेम बोल रहा था भैया. ठीक है, बढ़िया है ना. So are its examples. विश्व मानव परिवार सभा की गरिमा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा संतुलन संबंधी औजारों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है. एज पर द स्टेचर ऑफ द वर्ल्ड फैमिली काउंसिल, दे नीड टू पे मैक्सिमम अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स विच रन ऑन सस्टेनेबल एनर्जी. विद्युत ऊर्जा, विकरणीय ऊर्जा, ये दो प्रकार की ऊर्जाएं अति महत्वपूर्ण है. इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इनमें से विकरणीय ऊर्जा पर संतुलन का नजरिया विश्व मानव परिवार सभा में सुस्पष्ट रहने की आवश्यकता है. आउट ऑफ दीज, the World Family Council needs to be absolutely clear about the long-term impact of nuclear energy. Okay, right now there's a lot of debate on whether it is good or not, whether we should expand it or not. So this is something policy making level, by understanding, the World Council will need to focus on.
इसे कारगर बनाए रखना अर्थात सर्वस्व करने योग्य ज्ञान विवेक विज्ञान कर्माभ्यास संपन्नता को बनाए रखना है। This council will ensure continuity of its knowledge, wisdom, science and practice so as to make it accessible to all. किसी भी सोपानीय आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा शिक्षण की कर्माभ्यास की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। They will make provisions for providing education, training and practice to any other tiers if needed. यही विनिमय का प्रधान स्वरूप रहेगा। दिस विल बी द ट्रू फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज डायमेंशन। यह विश्व मानव परिवार सभा का महिमा मंडित स्थितियों के लिए अनुकूल है। इट बिफिट्स द टॉल स्टेचर ऑफ द वर्ल्ड फैमिली काउंसिल। ठीक है, ठीक लग रहा है? जी भैया। जी। पांचवी इसको कौन पढ़ेंगे? दिव्या आप पढ़ेंगे इफ पॉसिबल? हाँ जी सर, पढ़ता हूँ। एक जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। अब पांचवी कड़ी स्वास्थ्य संयम ही होता है। इस अंतिम सोपान में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य संयम में स्वायत्त रहने के लिए सर्वोत्कृष्ट विधियों को शोध पूर्वक कर्माभ्यास के लिए रहना आवश्यक है। महिमानुसार अपेक्षा भी मानव कुल में होना स्वाभाविक है। इस आधार पर ऐसी स्थिति में जो अनुसंधान होगा विश्व मानव के लिए उपकार में रहेगा। इस प्रकार विश्व मानव परिवार सभा में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य का नजीर बना ही रहेगा। यह लोक व्यापीकरण होने की व्यवस्था बनी रहेगी। तो should I go ahead with the English one or Spencer? आप ही कर दो भाई। Hello. हाँ दिव्य आप ही कर दीजिए। Okay, sure. Health Sanyam is the fifth element of this council. At this last tier to remain empowered in the area of health Sanyam, it is essential to continue the use and further development of the best practices. Humankind naturally has such expectations from the council of this stature. On this basis, the research undertaken will be beneficial for the whole of humankind. In this matter, the World Family Council shall always remain a perfect example of good health, and it shall have provision for disseminating its high standards to the other tiers. Thank you, sir. गुड, थैंक यू दिव्य। सो पांचवी कड़ी स्वास्थ्य संयम ही होता है। हेल्थ संयम इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ दिस काउंसिल। इस अंतिम सोपान में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य संयम में स्वायत्त रहने के लिए सर्वोत्कृष्ट विधियों को शोध पूर्वक कर्माभ्यास किए रहना आवश्यक है। At this last tier, remaining empowered in the area of health, to remain empowered in the area of health Sanyam, it is essential to continue the use and further development of the best practices. तो सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य संयम को बोला मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना। तो ये सर्वोत्कृष्ट जो है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में है। तो टू रिमेन एम्पावर्ड इन द एरिया ऑफ हेल्थ संयम में स्वायत्त रहने के लिए ओके इट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द यूज एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। महिमा अनुसार अपेक्षा भी मानव कुल में होना स्वाभाविक है। Humankind naturally has such expectations from the council of this stature that they will be, engaged in the best practices. इस आधार पर ऐसी स्थिति में जो अनुसंधान होगा विश्व मानव के लिए उपकार में होगा। On this basis, the research undertaken will be beneficial for the whole of humankind.
इस प्रकार विश्व मानव परिवार सभा में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य का नजीर बना ही रहेगा। तो नजीर जो है, इसको एग्जाम्पल कह रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल जो है ये बना रहेगा। और यह लोकव्यापीकरण होने की व्यवस्था भी बनी रहेगी। So in this manner, the World Family Council shall always remain a perfect example of good health, and it shall have provision for disseminating its high standards to the other teams. Okay, so basically, as we go up in the hierarchy, so to say, okay, from first year to second, second to third, third to fourth, the knowledge base will keep on increasing. Okay, the expertise will keep on increasing, and then naturally what will happen is whatever expertise, the high standard, the higher tier has achieved. Here it is being talked about that at the 10th tier, whatever high standard has been achieved, this high standard, the efforts will be made. Okay, the encouragement will be there to to have the similar high standards at the 9th tier, 8th tier, 7th tier also. It is mentioned in the health Sayam, but everywhere it will be there. In the production, in the education, in justice, everything will be in all dimensions. It will be like this. It goes without saying. Okay. So 2 paragraphs remaining. So this way, up to so far, the 5th element of the 10th tier, that has also been discussed. So 10 सोपानी व्यवस्था 10 tier system का discussion जो है वो complete हो गया है। अब उसका एक तरह से next 2 small paragraph में बस summarize कर रहे हैं। So we will read them now one by one. कौन? शिल्पा दीदी पढ़ेंगे आप फिर से, या और भी कोई है क्या ग्रुप में जो पढ़ना चाहते हैं? मैं आई एम नॉट सीइंग प्रभा कौन दीदी कौन। है, प्रभा दीदी को पढ़ना है तो। हाँ, प्रभा दीदी आप पढ़ना चाहेंगे? ठीक है भैया। कहाँ से पढ़ना है? सॉरी, मैं किचन में थी तो इसलिए मैं सिर्फ सुन पा रही थी, तो नहीं आप नहीं, प्लीज आप पढ़ लीजिए। देखिए, अगर वो आपके सबसे काम में डिस्टर्बेंस हो रही है तो रहने देते हैं दीदी, कोई ऐसा किचन खुल मुश्किल के नहीं। नहीं होगा, नहीं हाँ होगा जी, भैया डिस्टर्बेंस। ये उक्त प्रकार से यहाँ से पढ़ना है? हाँ जी, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है भैया, मैं ट्राई करती हूँ। पढ़ रहे हैं दीदी? हाँ, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही थी, सॉरी। ओके। उक्त प्रकार से 10 सोपानी 5-5 कड़ियों पर सुसंगठित रहना सामान्य नजरिया से समझ में आता है। इस सुसंगठन का तालमेल दूरसंचार विधि से एक दूसरे कड़ियों के साथ अनुप्राणित प्रतिप्राणित रहेगा। अनुप्राणित का तात्पर्य अनुक्रम से प्रेरणाएं सूचनाएं पहुंच पाना, सत्यताएं सूचित हो पाना। प्रतिप्राणित का तात्पर्य प्राप्त सूचना के अनुसार अपेक्षित परिणामों से अवगत होना। ऐसी अनुप्राणित प्रतिप्राणित क्रियाएं ग्राम परिवार राज्य सभा से विश्व परिवार सभा तक, विश्व परिवार सभा से ग्राम मोहल्ला परिवार सभा तक वर्तने की व्यवस्था बनी रहेगी। In this manner, a general understanding of the constitution of the 10-tier system by way of 5 elements is developed from the explanations given above. By way of telecommunications, coordination of this constitution will be mutually inspired and energized by all its elements. Meaning of being inspired is being in proper receipt of inspiration, information, and truths. Meaning of being energized is having knowledge of the expected outcome based on the information received. There will be provision for inspiration and energization from village family council
to World Family Council and from World Family Council to Village Family Council. बढ़िया हो भैया गया प्रभा देवी। हाँ जी, बस थैंक यू। बाकी हम इसके ऊपर अब बात कर लेते हैं। थैंक यू देवी। उक्त प्रकार से 10 सोपानीय 5-5 कड़ियों पर सुसंगठित रहना सामान्य नजरिया से समझ में आता है। In this manner, a general understanding of the constitution of the 10-tier system by way of 5 elements is developed from the explanations given above. इस सुसंगठन का तालमेल दूरसंचार विधि से एक दूसरे कड़ियों के साथ अनुप्राणित प्रतिप्राणित रहेगा। By way of telecommunications, coordination of this constitution will be mutually inspired and energized by all its elements. So बाबा जी टेक्नोलॉजी को नेगेट नहीं कर रहे हैं। बाबा जी इज सॉर्ट ऑफ incorporating technology in the Sopani Vyavastha, okay, because this will be spread all over the world. Okay, there will be need for communications between the tiers. Okay, so all of them will be interconnected by telecommunications. So by way of telecommunications, coordination of this constitution, which constitution? Constitution of the 10-tier system by 5 elements in each tier. Okay, this coordination of this constitution will be mutually inspired and energized by all its elements. है ना, एक दूसरे कड़ियों के साथ अनुप्राणित प्रतिप्राणित रहेगा। Now, I have made some assumptions यहाँ पर जिस तरह से ये बता रहे हैं, तो अनुप्राणित की भी परिभाषा दे रहे हैं और प्रतिप्राणित की भी परिभाषा दे रहे हैं। तो मैंने परिभाषा से फिर शब्द चूज करने की कोशिश की है। सो अनुप्राणित का तात्पर्य अनुक्रम से प्रेरणाएं, सूचनाएं पहुंच पाना, सत्यताएं सूचित हो पाना है। ये है अनुप्राणित का मतलब। सो मीनिंग ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड is being in proper receipt of inspiration, information and truths. Okay, तो अनुक्रम से, okay, in a proper structured manner, in correct sequence, सूचनाएं, सत्यताएं, प्रेरणाएं पहुंच पाना, इसको कहा अनुप्राणित। तो I mean, the way I look at it, हम भी जब when we are studying मध्यस्थ दर्शन, so all these informations and inspirations and truths, they are reaching us also. Okay, so this process of reaching us is doing something in us. So this doing something in us is what is happening. We are being inspired. Okay, so जो अनुप्राणित का मतलब ये है, ये अपने में पहुंच जाना और उससे अपने में कुछ हो रहा है। So this is being inspired. प्रतिप्राणित का तात्पर्य प्राप्त सूचना के अनुसार अपेक्षित परिणामों से अवगत होना है। मीनिंग ऑफ बीइंग एनर्जाइज्ड। सो अनुप्राणित को बीइंग इंस्पायर्ड बोला और प्रतिप्राणित को बीइंग एनर्जाइज्ड बोला। ओके, तो थोड़ा सा स्थिति गति वाला जो है वो एक जो है या इनटेक एंड आउटपुट, उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो इंस्पायर होता हूं और फिर कुछ एनर्जाइज्ड भी फील करता हूं और फिर उसके बेसिस पे कुछ करता भी हूं, है ना। तो प्रतिप्राणित का मतलब तात्पर्य प्राप्त सूचना के अनुसार अपेक्षित परिणामों से अवगत होना है। मीनिंग ऑफ बीइंग एनर्जाइज्ड इज हैविंग नॉलेज ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। Okay, so one can see that this information, when it reaches, what will be the outcome that will be there. So then that outcome energizes us. If the clarity of the confidence in that outcome, yes, my own state is improving, the state of my family is improving, or first of all, it will improve. Then when we make effort and we see improvement in that, then we have more confidence. So this is the cyclic process. The confidence keeps on increasing. Okay, so this is the meaning of being energized. That what is the expected outcome, and our confidence in that expected outcome keeps on increasing. It becomes strengthened more and more. ऐसी अनुप्राणित प्रतिप्राणित क्रियाएं
ग्राम परिवार राज्य सभा से विश्व परिवार सभा तक और विश्व परिवार सभा से ग्राम मोहल्ला परिवार सभा तक वर्तने की व्यवस्था बनी रहेगी। There will be provision for inspiration and energization from Village Family Council to the World Family Council and from the World Family Council to the Village Family Council. Okay, so this will be a two-way process. It is not only the higher authorities inspiring the lower authority or something like that, as sometimes we see in the prevailing systems. Someone is doing something good at the village level will provide inspiration and energization to the fourth, fifth, and sixth tier also, and something like that. बताइए, this अनुप्राणित प्रतिप्राणित जो है, इसको ऐसा बीइंग इंस्पायर्ड एंड बीइंग एनर्जाइज्ड करके लिया है। ये सारी मेन में सबसे पहले क्या करें कि एक दूसरे के साथ अनुप्राणित प्रतिप्राणित रहेगा, तो एक दूसरे के साथ में ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द टीयर्स दे विल बी इंस्पायरिंग ईच अदर एंड दे विल बी एनर्जाइजिंग ईच अदर, ऐसा करके एक सेंस। ठीक लग रहा है? भैया मेरा एक सजेशन था कि जैसे आपने ट्रूथ्स लिखा है ना, तो अगर इंस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन एंड ट्रूथ या तो हो, या फिर हो इंस्पिरेशंस, इंफॉर्मेशंस एंड ट्रूथ्स। हाँ वो ठीक है, लेट मी सी। मैंने हाँ हिंदी में भी प्लूरल में ही है, तो सत्यताएं तो मैंने ट्रूथ्स लिख दिया। आई डू नॉट नो व्हाई आई डिड नॉट पुट इट इन प्लूरल द अदर टू वर्ड्स। For receipt of informations, inspirations and truths. This matches well, है ना? ये भी प्लूरल में है। और इंफॉर्मेशन भैया वैसे कुछ होता नहीं है वर्तनी की व्यवस्था, सॉरी क्या जी। देव मैं भाई यही क्या बोल कह रहा था, इंफॉर्मेशन शायद कुछ होता अब नहीं हाँ, है। गूगल को भी अच्छा नहीं लग रहा ये। तो मे बी आई हैड ट्राइड इट। वी कैन ओवररूल गूगल आल्सो, यू नो। आई थिंक कोई ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है क्योंकि ऐसे इंस्पिरेशन एक्चुअली तो इसमें होता वर्ड है। यूज ऐसा नहीं होता है, इंफॉर्मेशन इज हाँ, इंस्पिरेशंस तो ठीक है। हाँ, तो जैसे हिंदी में सूचनाएं तो ठीक लगता है। ओके, तो इंग्लिश में ऐसा क्या हो जो प्लूरल में भी लिखा जा सके? फैक्ट्स, नॉलेज। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन लेके ही चलते हैं। वो ऐसी जी। इट्स नॉट ए बिग डील, मतलब यू नो लाइक एन मैसेज कन्वे हो ही रहा है। भैया जो लास्ट सोच के लाइन में बाद है वर्तनी की व्यवस्था, इसको हम कैसे लिख रहे हैं? मतलब वर्तनी को लाइक हाउ इज इट यूज्ड इन इंग्लिश? हाँ, ऐसी अनुप्राणित प्रतिप्राणित क्रियाएं। तो बाबा जी ने ना एक्चुअल में वर्तना जो है ना, वो ये जिसको वर्तमान बोला है ना, वर्तमान का मतलब ही ये है कि क्रियाएं जो है ना एक दूसरे के साथ में वर्तती रहती हैं। देयर आर इंटरेक्शंस, है ना, नॉट ओनली इन ह्यूमंस आल्सो बट इन द अदर थ्री ऑर्डर्स आल्सो, है ना। जैसे कि व्हेन द सन शाइन्स, है ना, वाटर इवेपोरेट्स। Okay, the shining of the, I mean, the sun is always shining, but when the let's say when the rays fall on certain part of the earth and there is heat, then the water evaporates. Okay, so shining of the sun or rays falling on the heat, this is also a kriya. Evaporation is also a kriya. ठीक है, तो ये इनका ना चलता रहता है, मतलब इट्स ए कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स, इट इज सीजलेस। ठीक है, तो यही वर्तमान है। तो वर्तमान को वर्तते रहने से बाबा जी ने परिभाषा में भी लिंक किया है। कहीं पे एक ऐसा लिखा हुआ भी है, वर्तते रहना ही वर्तमान है ना। हम परिवार में भी एक भाषा भी पंजाबी में या हिंदी में बोलते भी हैं कि एक दूसरे के साथ में वर्तते रहते हैं, है ना।
निर्वाह करना जो है वो भी वर्तना जैसे उससे एक एक शब्द जो है वो बनता है। तो इसमें भी among all the tiers there will be continuous interactions, ये जो है मतलब इसमें से इतना जो है व्यवस्था बनी रहेगी। तो there will be provision for inspiration energization from village family council to world family council and from family council to village family council। तो हमने मतलब सेंस लिया है दीदी इंग्लिश में रीडेबिलिटी के हिसाब से, वो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने से कई बारी जो है ना वो बनता नहीं है, मतलब एवरी देयर इज यूनिकनेस टू एवरी लैंग्वेज आल्सो। तो भैया जैसे आपने बोला ना ceaseless, I think there will be ceaseless provision for inspiration, that also fits well. तो प्रोविजन को कर देते हैं सीजलेस, जो है वो इंस्पिरेशन रखते हैं। नहीं नहीं, there will be ceaseless provision जो for inspiration जैसे आपने लिखा है ना, only अच्छा। provision के पहले अगर हम ceaseless लगा दे तो it's conveying the meaning। जैसे आपने एक्सप्लेन भी करा ना कि it's ceaseless, तो there will be ceaseless provision। ओके, आई एम गुड विद दिस। ठीक है, एनीथिंग एल्स? लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? देव भाई। जी भैया। ओके। इस विधि से हम मानव सामुदायिक मानसिकता से ओढ़े हुए सारी आपराधिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। सामुदायिक चेतना विधि से ही द्रोह, विद्रोह, शोषण युक्त प्रचलन जैसे अभिशाप, प्रदूषण जैसे अभिशाप, इन दोनों से उबर सकते हैं। फलस्वरूप मिलावट जैसे अभिशाप, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसे अभिशापों से मुक्त हो पाते हैं। संग्रह सुविधा, भोग अतिभोग की मानसिकता से परिवर्तित होकर, जागृत होकर समाधान, समृद्धि, अभय, सअस्तित्व, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील होने के प्रमाणों का मानव कुल प्रमाणित कर सकता है। यही शांतिपूर्ण समाधानपूर्ण जिंदगी का प्रमाण है। In this manner, we humans can get rid of all our criminal tendencies under the influence of the sectarian mindset. It is only by the way of collective consciousness development that we humans can revive and recover from the curse of offense, rebellion, exploitation, and pollution. Consequently, humans can get rid of the curse of adulteration, bribery, and corruption. After abandoning the mindset of accumulation, comforts, and hedonism, and upon awakening, humankind can produce evidence of resolution, prosperity, fearlessness, coexistence, utilization, righteous utilization, and purposefulness. This is the evidence of peaceful and resolved living. Oh, sorry, I was on mute. So thank you, देव भाई। लाइन बाय लाइन भी देख लेते हैं। इस विधि से हम मानव सामुदायिक मानसिकता से ओढ़े हुए सारी आपराधिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। In this manner, we humans can get rid of all our criminal tendencies under the influence of the sectarian mindset। ये समुदाय जो है इसको सेक्टेरियन बोला है, मतलब सेक्टेरियन, आई कीप ऑन रिपीटिंग बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। सेक्टेरियन इज टेकन फ्रॉम सेक्शन, सेक्शन मीन्स टुकड़े, मतलब पार्ट, सो द होल गेट्स मिस्ड आउट व्हेन वी लुक एट सेक्शन। ओके, so the whole is, the understanding of the whole is important, then the role of the part becomes clear. So sect is from sections. Okay, so sectarian mindset is, it may be talking about unity, but it has no clarity about how to achieve unity. That is why unity has been elusive for thousands of years.
तो ये सेक्टेरियन माइंडसेट जो है, इसको बाबा जी ने सामुदायिक मानसिकता जो है ना, या समुदाय, इसको जो समाज को टुकड़ों में बांटता है, ये शब्द बार बार आता है। इसको मेरे को लगता है हर बार के थोड़ा हम अपने में स्थिर कर ले, मतलब कहीं पे भी अगर कोई नया मेंबर भी ज्वाइन करें उनको भी ये स्पष्ट रहे। So in this manner, we humans can get rid of all our criminal tendencies under the influence of the sectarian mindset. सामुदायिक चेतना विधि से ही द्रोह, विद्रोह, शोषण युक्त प्रचलन जैसे अभिशाप, प्रदूषण जैसे अभिशाप, इन दोनों से उबर सकते हैं। It is only by way of collective consciousness development that we humans can revive and recover from the curse of offense, rebellion, exploitation and pollution. है ना, द्रोह, विद्रोह, शोषण, इसके लिए बोला, ऑफेंस नहीं, अच्छा ये दो सेंटेंसेस हैं। आई हैव चेंज्ड इट टू टू पार्ट्स। सो द्रोह, विद्रोह, शोषण जो है, प्रचलन जैसे अभिशाप, और साथ में लिखा प्रदूषण जैसे अभिशाप। सो देयर आर 3 अभिशाप हेयर, है ना, सामुदायिक चेतना विधि से द्रोह, विद्रोह, शोषण युक्त प्रचलन जैसे अभिशाप, और फिर प्रदूषण जैसे अभिशाप, इन दोनों से उबर सकते हैं। सो आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस कॉन्स्ट्रक्ट, सो आई made all these 4 words together. So offense, rebellion, exploitation and pollution. So it is only by way of collective consciousness development that we humans can revive and recover from the curse of offense, rebellion, exploitation and pollution. फलस्वरूप मिलावट जैसे अभिशाप, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसे अभिशापों से भी मुक्त हो सकते हैं। Consequently, humans can get rid of the curse of adulteration, मिलावट के लिए adulteration, रिश्वतखोरी के लिए ब्राइबरी एंड भ्रष्टाचार के लिए करप्शन। संग्रह, सुविधा, भोग, अतिभोग की मानसिकता से परिवर्तित होकर, जागृत होकर, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील होने के प्रमाणों को मानव कुल प्रमाणित कर सकता है। तो भोग, अधिभोग जब इकट्ठा आता है तो वी आर यूजिंग द वर्ड हेडोनिज्म। इन इंग्लिश दिस वर्ड एग्जिस्ट्स, hedonistic mindset or hedonism, which indicates, overindulgence in physical activities or sensory pleasures or things like that. So भोग, अतिभोग को combined form hedonism लिया है। So संग्रह, सुविधा को accumulation, comforts. सो इस मानसिकता से परिवर्तित होकर, जागृत होकर ये सब होगा जो आगे लिखा। तो इसको कहा, आफ्टर अबंडनिंग द माइंडसेट ऑफ एक्यूमुलेशन, कंफर्ट एंड हेडोनिज्म, एंड अपॉन अवेकनिंग, humankind can produce evidence of resolution, prosperity, fearlessness, coexistence, utilization, righteous utilization and purposefulness. यही शांतिपूर्ण, समाधानपूर्ण जिंदगी का प्रमाण है। दिस इज द एविडेंस ऑफ पीसफुल एंड रिजॉल्व्ड लिविंग। एंड ऑफ चैप्टर 7। बताइए, ठीक हो गया? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लग रहा है। जी भैया, बहुत बढ़िया। So we've reached another milestone. We finished Yes, our yes, last yes, chapter. yes, yes. ठीक है। So if I look at the Hindi book, the next chapter starts from page number 131 and there are total 142 pages. So yes, 142. So 12 pages are remaining. So I think 6-7 sessions. Now we are doing almost 2 sessions. 2 pages a day. per week, per session, which is once a week. So I think 6-7 weeks we are talking about to cover the next chapter, and which means covering the book. So sounds good. Any observations, any comments?
For me, like the Anupranit, Pratipranit is very interesting concepts, both of them. How we see it in like everything around us and how we see it within ourselves. Good. So that is good as far as today's reading and that particular paragraph is concerned. Otherwise, if we look at the chapter overall, okay, in this chapter, there were two main things. In the first 4-5 pages, there were Babaji mostly in each of the book describes the whole Madhyas Darshan literature. Okay, what is written in Bhautikvad, what is covered in Adhyatmavad, what is covered in Vyavahaar Darshan. So first 4-5 pages are dedicated to that of chapter number 7, and then the following 15-20 pages they are dedicated to explaining the 10-tier system. My suggestion to all of you who regularly joined and were remaining totally involved and interested in this is, although we have read it on 2 pages at a time, now that we have completed this reading, it will be a good idea to read all these 20 pages, okay, of the 10-tier system again in one flow whenever you have some time. Okay, and that will increase the clarity. That will make us more clear about what it is. And many times when Babaji says, this is something which personally happened to me, okay, that although Babaji may be saying something is happening at the 10th tier or 10th or 7th tier will focus as something, 5th tier will focus as something, it is not very difficult to visualize what are our takeaways for our family also, or in our surrounding and living also. Okay, it is not only that it is relevant at the 7th tier only or at the 10th tier only. Many of those things which Babaji is mentioning there are straight away can be taken into our day-to-day living also. In our families also, we can take those clues and see what needs to be done, if there is any course correction required. Okay. That has been a key takeaway for me. And when you are reading it, maybe that is one perspective you can keep open. जी भैया, makes sense. Okay. Next chapter name is Jan Charcha ki Avashakta. So we can just spend 1 or 2 minutes to look at the structure of this sentence. Okay, as a structure of this chapter. Isme Babaji, what he has done is he has dedicated 1 page, almost 1 page each to some 10 or 12 topics. Okay, so like for example, the topics here are conversations indeed are the foundation of education sanskar, or the key to building conducive environment. So now this is the title, and then Babaji explains that how it is, what are the way he looks at it. So conversations indeed are the foundation of education sanskar. Education sanskar is not only which happens in the classroom, okay, or informal education. Conversations indeed are the foundation of education sanskar. And conversations we all do in our families every day. With our spouses, with our siblings, with our children, with our parents, with our friends, with our colleagues, with our neighbors. So how this relationship we can understand and then incorporate in our living. Okay. So again a very interesting dhyana drawing of attention, that conversations indeed are the foundation. Now the next one is unveiling of societal insights in conversation. Okay. जन चर्चा में सामाजिक सूत्रों का उद्घाटन. Okay, so there are a lot of things happening in society. Can we get insight in that? If I get insight, can I communicate that insight during normal conversations? Okay, instead of leaving it to the university. Okay, so these are the kind of some 10 or 12 topics in the next 12 pages, which we will read in chapter number
8. Very important chapter, I think. Whatever Babaji has described so far, उसको एकदम से बिल्कुल उसका practical implication, practical impact, है ना, practical implementation, उसकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं. So I just thought that we'll give a introduction to this, and then we'll start reading it next time. All right, looking forward. Okay, thanks for joining. Any closing comments from anyone? Please, you are welcome. Otherwise, we can close. All good, Bhaiya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks for joining. When you join, I also feel inspired and energized. Great. Yeah. Thank you for sharing everything. It was really nice. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye, everyone. Thank you. Bye-bye.